Assalamualaikum, dear students. Glycolysis with MCQs, important MCQs. Let's say glycolytic pathway regulation involves allosteric stimulation by ADP, no allosteric inhibition by ATP, a feedback or प्रोडक्ट इनहिबिशन बाय एटीपी ऑल ऑफ द अबव यस। तो याद रखिए ग्लाइकोलिटिक पाथवे रेगुलेशन में ये चारों काम आते हैं। एलोस्टेरिक स्टिमुलेट एडीपी से भी हो सकता है, ये एटीपी इनहिबिशन एलोस्टेरिकली भी हो सकती है, या फिर एटीपी का फीडबैक भी हो सकता है। तो ये ऊपर वाले तीनों मैकेनिज्म्स दुरुस्त हैं। Why does the glycolytic pathway continue in the direction of glucose metabolism? Number one, there are essentially three irreversible reactions that act as the driving force for the pathway. This is true. Glycolytic pathway हमेशा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की डायरेक्शन में ही कंटिन्यू रहता है। वजह यह है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस एक ही वक्त में तीन अदद फोर्स अप हो रहे होते हैं, कैरी आउट हो रहे होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रिलीज्ड एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, किसके तौर पे स्टोर होती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, नो एडीपी, नो एटीपी, यस एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर की जाती है। अ काइनेज इज एन एंजाइम that removes phosphate group of the substrate, no uses ATP to add phosphate group to substrate, yes। काइनेज ऐसा एंजाइम है जो किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए एटीपी का इस्तेमाल भी करता है। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म ओनली about 40% of the energy available from oxidizing glucose is used to synthesize ATP. Remaining 60% is lost as a heat, yes। जब भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है 40% एनर्जी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से पैदा होने वाले एनर्जी अमूमन एटीपी सिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, जबकि जो रिमेनिंग 60% एनर्जी होती है वो बॉडी से हीट के तौर पे लॉस कर जाती है। सो ए ऑप्शन इज राइट वन। For every one molecule of sugar glucose which is oxidized, dash molecule of pyruvic acids आर प्रोड्यूस्ड। ग्लूकोज के एक मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन से दो पायरुविक एसिड मालिक्यूल्स पैदा होते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इज फॉस्फोरिलेटेड, while the dephosphorylation of which active form occurs, that is glycogen synthase। ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्लाइकोजन सिंथेज ही ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की एक्टिव फॉर्म है, जबकि डीफॉस्फोरिलेशन में ये ज़्यादा एक्टिव होती है। इन द ग्लूकोज सिंथेज रिएक्शन द प्रिकर्सर टू ग्लाइकोजन इज ग्लूकोज 6-phosphate, नो UTP ग्लूकोज, नो UDP ग्लूकोज, यस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस रिएक्शन में ग्लाइकोजन के लिए प्रिकर्सर सब्सटेंस अमूमन UDP ग्लूकोज होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम ATP इज 7.3 किलो कैलोरी। ATP से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिसीव की जाती है। The enzymes of glycolysis in a eukaryotic cell are located in intermembrane space, no plasma membrane, no cytosol, yes। यूकैरियोटिक सेलों में ग्लाइकोलाइसिस के लिए सेल के अंदर एंजाइम्स अमूमन सेल साइटोसोल में लाई करते हैं, पाए जाते हैं। When concentration of reactants is higher than the equilibrium concentration, then जब reactant equilibrium concentration से ज़्यादा होते हैं तब क्या होता है? The Gibbs free energy will be positive, no। The Gibbs free energy will be negative, yes।
एक बात पहली ज़रूरी बात ये गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी. सेकंड, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड. यस, सो डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी इज करेक्ट. Which of the following is not true of glycolysis? ADP is phosphorylated to ATP via substrate level phosphorylation. No, ये दुरुस्त बात है. हमने गलत की सिलेक्शन करनी है जो नॉट ट्रू में आता है. द पाथवे डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है. The pathway oxidizes two molecules of NADH to NAD positive for each molecule of glucose that enters. This is not true and it's wrong. So, according to our statement, option C is right. In glycolysis, ATP is formed by the transfer of a high-energy phosphate from 1,3-bisphosphoglycerate to ADR. No such high-energy phosphate donor has ever been isolated in mitochondria because the techniques for isolation the phosphate donor are not refined enough. No, it's not correct. No such phosphate donor exists. Yes. याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फोरिलेशन के लिए जो एटीपी की फॉस्फोरिलेशन के लिए स्पेशली हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी फॉस्फेट डोनर यही है, एडीआर ही है. The glycolytic pathway that has glucose to 2-pyruvate is found in all living organisms. Yes, glycolytic pathway तमाम living organisms में, यूकैरियोट्स में भी होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है. ATP is from which general category of molecules? ATP किन मॉलिक्यूल की जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है? पॉलीसेक्राइड से नो, प्रोटीन से नो, न्यूक्लियोटाइड से यस. ATP belongs to nucleotide category. Which of the following could act as an uncoupler of electron transport and ATP synthase? The ferrous oxide base piece of ATP synthase without the Fi subunit? No. Dinitrophenol? Yes. Neither A nor B. No. Both A and B is correct. याद रखिए कि अनकपलर ATP synthase जो ATP synthesis में अनकपलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो यूज़ होता है वो A और B डाइनिट्रोफिनोल भी हैं और ATP synthase एंजाइम भी है, लेकिन वो ATP synthase एंजाइम जिसके साथ Fi सब यूनिट अटैच नहीं होगी. Which of the following is not a mechanism for altering the flux of metabolites through the rate determining step of a pathway? Allosteric control of the enzyme activity? No. Diffusional coupling between adjacent active sites? Yes. तो adjacent active site के दरमियान diffusional coupling activity से ये मेटाबोलाइट अंडर थ्रू हो सकते हैं. Phosphofructokinase, the major flux controlling enzyme of glycolysis, is allosterically inhibited and activated by ATP and PAP. No. AMP and phosphate? No. ATP and ADP? Yes. So C is correct option. Which of the following regulates glycolysis steps? Phosphofructokinase? Yes. Hexokinase? Yes. Pyruvate kinase? Yes. So D option is right. During glycolysis, the major energy generating step involves pyruvate kinase? No. Phosphofructokinase? No. Glyceraldehyde 3-dehydrogenase? Yes. Option C is right. Glucose from the breakdown of glycogen is obtained the liver by phosphorylasis? No. The muscles by phosphorylasis? No. The muscles by hydrolysis? Yes. Option C is usually not right. It's wrong. Option D is right one, that contains liver by phosphorylasis and then the muscles by phosphorylasis.
तो याद रखिए ग्लूकोज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन लिवर और मसल्स में होती है, लिहाजा ये ऑप्शन डी ठीक है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट activates fructose 1,6 bisphosphate, no, activates fructose kinase, yes, ये ऑप्शन ठीक है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेस को एक्टिवेट करता है एंड देन इनहिबिट्स fructose 1,6 bisphosphate, yeah, so option D that contains B and C is right one. Glycogen has which linkage? कौन सी लिंकेज होती है? अल्फा 1,4 लिंकेज, नो। अल्फा 1,6 लिंकेज, नो। ऊपर वाली दोनों लिंकेजेस इकट्ठी होती हैं, यानी सी ऑप्शन ठीक है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेजेस। Thank you for watching Hussain lecture. Please subscribe for more